today we're going to talk about probability distribution. Let's draw probability distribution table when a dice is tossed. Okay. So when a dice is tossed, tell me what outcomes are possible when you toss a die. What can you get when you throw a die? One आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, 5 and similarly 6. We write x here and we write probability x equals x here. In the question, usually the capital X is defined, and we'll talk more about that when we do the actual past paper question. Okay, so just for now, remember that this is the format of drawing a probability distribution table. Okay, so in the bottom row, we have to write the probabilities of getting each value. So what's the probability that you get a 1 when you throw a die? It's 1 by 6. Probability of getting a 2 when throwing a die is also 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6. The total must always be equals to 1. So this sum will always be equals to 1. So this is the probability distribution table for a throw of dice. Okay. In most of the questions in part A, they'll ask you to draw a probability distribution table. In part B, they'll ask you to find the expected value. This is called expected value. This is basically the mean. But now since it's in table format, they'll call it expected value. Okay. And in part C, they'll probably ask for the standard deviation. Okay. So for probability distribution table, expected value and standard deviation have their own formulas. Expected value is found using summation x times probability. Pi represents probability. So how do we find the expected value here? X, which is 1 times its probability 1 by 6, plus 2 times its probability 1 by 6, plus 3 times its probability 1 by 6, all the way till 6 times its probability 1 by 6. So whatever is the answer is the mean or the expected value. मैम PI क्या चीज है? Probability. I वो iteration होती है कि first value, first probability, then second और probability. X से वो मतलब कि 1 2 3 हाँ up to 6 है ना मैम हाँ बिल्कुल टेबल में? बिल्कुल ठीक है ये अच्छा पहले we find this value. So 1 times 1 by 6, it's going to take a while, plus 2 times 1 by 6, plus 3 times 1 by 6, plus 4 times 1 by 6, plus 5 times 1 by 6, plus 6 times 1 by 6. So that's 3.5.
So that's like the mean of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or not exactly the mean, but अब हम उनकी probabilities को भी account for कर रहे हैं. Okay. And now we find the standard deviation. Standard deviation का formula होता है, symbol is this, sigma. Standard deviation is square root summation x square times its probability minus the square of the expected value that you found earlier. So now what you do, you find this first. So let's find that. Summation x square times probability is going to be 1 square times 1 over 6 plus 2 square times 1 over 6 plus 3 square times 1 over 6 all the way till 6 square times 1 over 6. इसका जो भी आंसर आएगा, then we'll do minus 3.5 squared and then we square root that. उससे हमारे पास standard deviation आ जाएगी. करके देख लेते हैं. So 1 square times 1 by 6 plus 2 square times 1 by 6 plus 3 square times 1 by 6 plus 4 square times 1 by 6 plus 5 square times 1 by 6 and plus 6 square times 1 by 6. That's 91 by 6. And now the standard deviation is going to be 91 upon 6 minus 3.5 squared and then square root. That's going to be square root 35 upon 12, which is 1.7078. 1.7078 rounded to 3 significant figure 1.71. Okay. Now I'm going to give you a question from the book. A cubical dice is biased so that the probability of an odd number probability of getting an odd number is 3 times probability of getting an even number. Construct the probability distribution table. So again, dice throw होने की बात हो रही है. So we start with x and probability capital X is equals to x. Dice throw किया, so it's either 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilities का है कि biased या dice biased है. Probability of getting an odd number is 3 times the probability of getting an even number. Ab, what would be that even probability and what would be that odd probability? Let's say कि k है probability even number की. So इसकी k होगी probability, इसकी k होगी और इसकी k होगी. तो फिर 1, 3 और 5 के आने की इसके ट्रिपल होगी. So 3k, 3k, 3k.
we know that the sum is 1. So from there you can find k, and from k you can find the actual probabilities. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 k equals 1. So k equals 1 upon 12. So I'm going to write the actual probabilities here. एक और नीचे column बना लेते हैं. Probability x equals x is going to be ये 1/4 हो गई, ये 1/12 हो गई, ये फिर 1/4, ये वाली भी 1/4, ये 1/12 और ये 1/12. If you add them all in the calculator, you should get 1. Ideally, you should be redrawing this table इसके बगैर for when you enter the actual probabilities. Okay, अब आपसे most likely इसकी expected value पूछी जाएगी और इसकी standard deviation या variance पूछी जाएगी. Variance में बस आप square root नहीं लगाते standard deviation पे, बाकी सब same रहता. Okay. So let's find the mean. I mean the expected value. It's going to be summation x times probability. So 1 times 1/4 plus 2 times 1/12 plus 3 times 1/4 plus 4 times 1/12 plus 5 times 1/4 plus 6 times 1/12. Which is 3.25. Okay. Now find the standard deviation, which is square root summation x times probability minus square of the expected value. And sorry, there's a square on it as well, x squared p. So now you sum all the values again, but this time you put a square on x, and then you just substitute the values here in the formula. So you get a value from there. अभी वो हम निकाल नहीं रहे. Okay, next question. A cubical dice is biased. Okay. So that probability of 1 in 6 from 1 to 6 is part A proportional to the score? Proportional means directly proportional. Part B, inversely proportional to the score. Okay. Part A करते हैं पहले. So we formed the probability distribution table. यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे probability capital X equals x, यहाँ पे आ गया outcomes 1.
2, 3, 4, 5, 6. Okay. Part A में कहा है कि जो probability it's proportional to the score. That means directly proportional to the score. That means जितना स्कोर बड़ा है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो स्कोर आने की. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इफ आई से x इज और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल्स टू kx होता है. सो यू मल्टीप्लाई k विद द नंबर्स. जब स्कोर 1 है तो k1, then k times 2, then k times 3, then k times 4, then k times 5, and then k times 6. And we know that this sum is going to be equals to 1. So what's the sum of 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1? It is पता नहीं, मैंने लिखा ही नहीं हुआ. Let's count 6. 21k. So k will be equals to 1 upon 21. Now draw the table again. I'm just adding a third row because I'm lazy. You will draw the table again. ऊपर x और नीचे नया वाला px. Probability x equals x. So k is 1 by 21. So this would be 1 by 21, 2 by 21, 3 by 21 can be written as 1 by 7. Or let's just write 3 by 21. Then 4 by 21, 5 by 21, and 6 by 21. Also, if you add them, notice you'll get 21 over 21, which is just 1. Now let's do part B, where the probability is inversely proportional to the score. Okay, part B, same, x, probability x equals x, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So when y is inversely proportional to x, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 by x. And it's going to be y equals k upon x. So we write k upon 1, k upon 2, k upon 3, k upon 4, k upon 5, and k upon 6. Okay. So you'll have to take LCM here to add them. या कैलकुलेटर में ही कर लो. 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 5 plus 1 over 6, और जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ k मल्टीप्लाई कर दो. So k plus k upon 2 plus k upon 3 plus dot 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 k upon 6. We know this is equals to 1. So that gives 49 over 20. K equals 1. So k comes out to be 20 upon 49. Now what you'll do in the block or in the table, you replace k with 20 over 49. So I'm not going to do it, but करना यही है. जहां जहां k लिखा है उसकी जगह 20 over 49 करके you get a proper probability distribution table. In the next part, they will most likely be asking you to find the expected value, Ex equals summation x times pi, and most probably the standard deviation, जिसका स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला है, और अगर वेरिएंस पूछ लिया तो फिर स्क्वायर रूट हटा देना. Okay.
अब जब हमने प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट की थी तो उसमें कई कई क्वेश्चन आते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो मैं छुड़वा देती थी। तो अब कर लेते हैं जरा। Let's see. क्वेश्चन 15 तक। तो मैंने ये वर्कशीट पहले ही शेयर की हुई है, प्रोबेबिलिटी वाली जो हमने की थी। अब उसका क्वेश्चन 15, but I'm not going to copy all of 15. I'm just going to copy um, that particular part जिसमें probability distribution table बनाना था. So this is a question from the probability worksheet. And its last part. Okay. अब क्या कह रहे हैं कि box A contains 5 red clips and 1 white clip. Box B contains 7 red clips and 2 white clips. Let me draw that. Box A, box B, five red, one white. So 1, 2, 3, 4, 5 red and 1 white. White को किस कलर का करें? ग्रे कर दे। नजर आ रहा है? Yep. Okay. और दूसरे में 7 red and 2 white and 2 white. One paper clip is taken at random from box A and transferred to box B. One paper clip is then taken at random from box B. A random variable x, चाहिए आपकी हिंट होती है कि ये probability distribution का क्वेश्चन है. A random variable x denotes the number of times that a red paper clip is taken. Draw up a table to show the probability distribution x. चलिए अब red आना चाहिए आउटकम. तो वो रेड ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, या दोनों में आ सकता है. तो अब आपने अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये दिखाना है कि x probability x equals to x, sorry, capital X equals to x. Okay. Now, how many reds can be obtained? एक वो केस होगा जिसमें कोई भी रेड ना आए, 0 रेड आए. फिर एक केस होगा जिसमें ए में आ गया और बी में नहीं आया, या फिर बी में आ गया रेड, ए में नहीं आया, तो उसमें 1 रेड आ रहा है. फिर एक केस है जिसमें दोनों में रेड आ रहा है, और उसके अलावा और कोई केस नहीं. सो जस्ट 0, 1. Either there's no red, there's one red, or they're both red. तो पहले ना हम probability 0 फाइंड करते. प्रोबेबिलिटी के कोई भी रेड नहीं आया. इसका मतलब है कि ये केस है कि पहले में भी white आ गया. Sorry, it's supposed to be white. Yeah, white in A and white in B. So what's the probability of getting a white clip in box A? That's 1 upon 6. Yes. अब इसमें white आया तो ये एक white इधर चला गया. So now the probability of getting a white in the next table should be 3 upon, ये total कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गए. So it's going to be 1 by 6 into 3 by 10. Let me check. It's 3 upon 60, सही है. So I'm going to write 3 upon 60. Probability that no red clip is obtained from either of the boxes, it's 3 by 60.
Now we're going to find the probability that only one box contains or had a red paper clip drawn from it. So उसमें हम कर लेते हैं कि पहले कह देते हैं कि ए में वाइट आया, अच्छा सॉरी ए में रेड आया, बट इसका मतलब है फिर बी में वाइट आया और ए में वाइट आया और बी में रेड आया। अब ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके ऐड करेंगे। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट we get a red clip from A. So that's going to be 5 times 6. Yes, 5 upon 6, sorry. Times, now red आ गया तो अब ये एक red निकल के इधर आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेड है और टोटल 10 हो गए। ओके सॉरी, अब तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, रेड और फिर अगले में व्हाइट। सो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 2/10 प्लस प्लस फर्स्ट वाले में व्हाइट आना चाहिए, सो दैट्स 1/7, 1/6 सॉरी, इनटू सेकंड वाले में आना चाहिए रेड। अब इधर व्हाइट आया था तो व्हाइट एक इधर एक्स्ट्रा आ गया। So now we're finding the probability of getting a red clip. So 1 2 3 4 5 6 7 red clips हैं और total we are 10 red 10 clips हो गए, so 7/10. So this collectively gives 17/60. So probability of getting just one red clip from either of the boxes is 17/60. Now probability that you get both the white clips is when you get a white clip from A. Sorry, both are red, not white. So you get a red clip from A and a red clip from B. So that's 5/6 times that red clip now goes to this one. So it's 1 2 3 4 5 6 7 8 red upon a total of 10. That's 40/60. So this would be 40/60, and notice that the sum is coming out to be 60/60 of the bottom row. So that means this is correct. Okay. One more example question. Okay. So अब scenario given है कि dice is thrown and the number on top of the die is the number of forward movements made in the game. If a 6
is obtained, one more throw is given. Draw the probability distribution table. For the number of forward movements, for the forward movement. ओके, सो बेसिकली लूडो को समझा रहे हैं कि एक डाइस थ्रो किया, जो नंबर आया उतने आगे चालें चली, और अगर 6 आता है, छक्का आता है, तो फिर हम एक और बारी करने की परमिशन होती है। सो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कि क्या क्या मूवमेंट हो सकती हैं व्हेन यू थ्रो अ डाइस। सो एक्स, probability x equals to x। ओके, अब इसमें हो सकता है कि आपने डाइस फेंका और आपका 1 आया, डाइस फेंका आपका 2 आया, आपने डाइस फेंका 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, पर फिर 6 आया। लेकिन जब 6 आएगा तो खाली 6 नहीं करना, 6 के बाद एक दफा दोबारा फेंकना है डाइस, तो वो 6 and 1 हो सकता है। तो फिर एक आउटकम 7 होगा, 6 कोई आउटकम नहीं होगा। 6 खाली चालें कभी भी नहीं चली जाती, इट्स गोइंग टू बी 6 प्लस द वैल्यू यू गेट इन द नेक्स्ट थ्रो। तो ये 6 + 1 से आया, इसी तरह 6 + 2, सो वो हो गया 8, फिर 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12. These are the total number of forward movements that could be made. अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, डाई पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, लेकिन 7 आने की 1/6 नहीं है, क्योंकि वो पहले 6 आया और फिर 1 आया। So it's going to be 1/6 times 1/6. So that's 1/36. इसी तरह अगले सारे में भी 6 की प्रोबेबिलिटी एंड 2 की प्रोबेबिलिटी, और फिर 6 की प्रोबेबिलिटी और 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बाकी सारे 1/36 हो जाएंगे। तो 1/36 till the end। और अब आपको कहा जाएगा कि या इसका मीन निकालो, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, या वेरिएंस निकालो। उसके फॉर्मूलाज हमें पता है। यूजिंग दिस टेबल एंड दोस फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड दोस इजीली। ओके, आई थिंक लेट्स एंड द लेसन हियर। कल इंशाल्लाह इधर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूड कर देंगे। ओके, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो, अल्लाह हाफिज।